So we'll see decision tree implementation today. So today we have a lab session. We have already seen how to implement decision tree. Okay, but today we will do on a real data set. So how to look for a data set and then how to implement our decision tree. The dataset that I am going to use is the iris dataset. So we are familiar with this dataset, right? It is a dataset about a flower, one kind of flower called as iris, and we have different varieties of iris plant. Okay, and they vary in their sepal length and width. Okay, yes. So total we have three varieties of this iris plant, and their name is Xanthosa versicolor virginica, and we have these readings. Okay, readings of their flowers, sepal in terms of sepal length, sepal width, petal width, and in this data set the class is also given. Okay, so we have a label data. Okay, decision tree is a supervised learning problem, right? Okay, so we need a label data, and so we have that data, right? Okay, so we'll go to that dataset website and I will be downloading the dataset. So I will see the download link is here, data folder, and here iris.data, it contains the data. Okay, and then iris.name. Okay, then now, first you have to understand the data that you have. Okay, so you open that in Notepad, okay, and try to understand what information is given in that data set. So I have opened iris.names file. Have I shared the screen? Yes. Okay. So iris.names. So here, I think information about the data set is given. Okay, Iris plants database updated September 21 by C Black, added dispensary information. Sources: it was designed by Fisher. Okay, 1988. Then they have provided some publication based on that, then relevant information. So uh, number of instances, how many examples are given? 150, 50 in each three classes. Okay, so for versicolor we have 50, then for virginica 50, and Xanthosa 50. Attributes are 4 and all are numeric. Okay, so what we are doing, we are trying to understand the data that we are dealing with. Okay, and then the class label is also given. Okay, sepal length in centimeter. Okay, so that length, that number will be in a centimeter. For example, 4.9 centimeter. Okay, sepal width, petal width, and classes are given. Class values are like this. Okay, summary statistics: what is the mean value, max value? Okay, in this attribute, in this column. Okay, max mean is given. Okay, and class distribution is 33%. Yes, we have equal weightage for every class. Okay, 33%. So we have understood something about the data. Okay, so this is the actual data we have. Okay, so I think first one is sepal length, sepal width, petal width, and its class. Okay, now one thing we can observe is, for input attributes, input columns are numeric. Okay, so we need not to do the encoding for that. Okay, in Monday's lecture we have seen we have to encode the labels, right? We have a label encoder class for that. So no need of doing encoding for this because it is already in numeric form, and the class label, it is in string, so we will encode it. Okay, and first 50 samples are of Xanthosa, then versicolor and virginica. Okay, yes, so total 150 tuples will be there. Okay, and one thing we have observed, that this data set has started with the actual row. Okay, there is no attribute row. Okay, so that may create a problem, and we have to insert, I think, a column, sorry, attribute names.
Okay, so that is missing because previously KC जो थी ना अपने, एक मिनट I will show you. In last practical linear regression, ये KC underscore house dot data open with notepad. Okay, see, first row indicates attribute names id, date, price. Okay, और second row से हमें actual values मिलते हैं, but in our data set that is missing. Okay, that may create a problem, but we will try to handle that. Okay, so what I will do, I will open my Anaconda Jupyter notebook. Okay, and then once it is open, I will click on new button, Python 3. Okay, it will open my a fresh notebook, and let's name it. This is my lab 2 of 21 session. Okay, and based on decision tree and using iris dataset. Okay, so this is the name of my notebook. See, it will appear here. Okay, now so my input file, which is here, iris.names. Okay, let me copy that to that folder. Okay, because my notebook home directory is this one, so I will paste this here. Okay, I have already that file in this folder. Okay, so I have downloaded that file. I have kept it in a home directory of my Jupyter notebook. So I have to read that. Okay, so I will import. So we have a function read CSV, right? Import pandas as PD. Okay, import numpy as np. Okay, and PD dot read underscore CSV. Okay, CSV and the name of the file. Data iris.data. So now see, extension of this file is not CSV. So will it create a problem? So we'll check. And it gives me a data frame. Okay, a table like structure. Now if I open this file, okay, all the values are comma separated, so internally it is CSV file. Okay, though it is not means name doesn't contain CSV, but it is a CSV file. Okay, and don't write .csv here. Okay, because the extension is not there. Okay, so let us check this much code whether we are getting a data or not. Yes, we are getting a data. Okay, if I print data frame, okay, but see the problem, the first record is treated as the attribute values. Okay, getting the concept? And see here, 149 rows, 5 columns. Are you getting what we have seen so far? Anyone? Yes, sir. Yes. Okay. Yes. Now we have seen that it doesn't have the attribute column. Okay, so that's why this is placed here. There it is treated as an attribute name. Okay, so how to handle that? Okay, so if I don't know anything, what I will do, I will search, right? Header is missing in the data set. Okay, so I will see what information I can get. Read CSV. Okay. Okay, but I have to make a appropriate search in Python. Yes. Okay. Now, how to handle missing data with Python? No, missing data nahi hai. Header is missing. Skip rows and no, that will not solve problem. Pandas CSV with how to read Pandas CSV with no header. Header equals to 1, header equals to none. We need to keep header as none instead of 1. Okay, so we'll try that. Yes, we have a attribute in this, okay, called header. If you see the documentation of read CSV, okay, let us open the read CSV documentation.
So here, as you can see, separator, okay, separator, you can set separator other than a comma, and then you may find header, yes, header infer, header, and here you can say no, none, sorry, okay. So let us check this much, yes, okay, header equals to none, that means there is no header for this CSV file, okay, and it is treated as a first row now, okay, and we will get 150 rows now, 150 rows by 5 columns, okay, but we have to set the column names, okay. So for that, if I make a search, set header in data frame, that is my data frame, right, data frame, header in data frame. So names, or you can give columns, okay. So that data frame name dot columns and give the sequence, okay. So I can do that. So data frame dot columns, was it a capital C or small c? Small c. Small c equals to, I have to provide a list, okay. So let us copy the names from here. So these are my, okay, ये अपने एट्रीब्यूट नेम्स है, राइट। Yes, okay. So first will be sepal length in centimeter, sepal width in centimeter, petal length in centimeter, petal width in centimeter, and class, okay. These attributes will be set as the first row, okay, attribute row actually, okay. And now see the data frame, see, okay. So we have got what we expected, okay. At the top, attribute names, okay, and 150 rows along with the class, okay. So far no problem, right. So we have prepared our data, we have understood, and in the data set itself they said that there is no missing column, missing value, otherwise we have to do data imputation, okay. There is no missing value, so fine. Then we will proceed. So we have observed one thing, our class label is, class row is string values, okay. So we have to do a encoding for that. So what I will do, I will insert a new uh, cell, okay. First I will prepare x and y, okay. We know that x will be the input column and y is the output column, okay. In x, from my data frame, okay, I have to drop a class column, okay. अपने पास 5 columns है, तो उसमें से last हमें delete करना पड़ेगा because it is a output column, right. So I have a function called drop, okay. There we have to provide a column name, that is class, okay. And we have to delete a column, so I have to provide axis equals to 1. By this I will get x, and y will be df ka class column, right. Okay, so we will get x and y, okay. Let us print that. See, I have taken 4 columns in x, that will be my input, and an output, okay. Now let us encode this. So we knew that library, right. Its name is label encoder, right. Label encoder in sklearn, okay. So take that sk pre-processing label encoder, and can you tell me the function that we have to use for encoding? Anyone?
Do you remember that function name? One hot encoder. No, we are doing label encoding. One hot encoding is different. We have to use one function to encode. Okay, this is just the class. Okay, we have to call one function to perform a encoding. Okay, so this is a class. So here I have created its object. Now that function name is, okay, so can't you recall that? So we have studied that, right? uh, Decision tree practice नाम दिया था क्या? Yes, play tennis. See, that day we have implemented for play tennis, right? Okay, fit transform, right? यहाँ पे पूरे जो कॉलम्स थे वो स्ट्रिंग टाइप के थे, राइट? तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए थी, तो वी हैव यूज दिस लेबल एनकोडर क्लास और इट्स फंक्शन इज फिट ट्रांसफॉर्म. ओके, फिट ट्रांसफॉर्म यूज करके हमें वो एनकोडिंग करना है. ओके, फिट ट्रांसफॉर्म ऑन विच कॉलम? वाई कॉलम, राइट? और वो हम y में ही स्टोर करते हैं. ओके, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अनदर कॉलम, I will store that in y itself. Okay, so this is the y before encoding. Okay, जहाँ पे iris sentosa, वर्जिनिका और वर्सिकलर स्टोर है. अब एनकोडिंग के बाद क्या हो जाएगा? y, see, the first class is encoded as 0, then 50 samples for second class, and then 50 samples for third class. Okay, so we have the all the data in numeric form. Now I can use the decision tree classifier library. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे decision tree classifier सर्च करेंगे. ठीक है, ये साइकिट लर्न की वेबसाइट है, तो वहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं. सो दिस इज डिफाइंड इन sklearn.tree. यहाँ पे डिफाइंड है, ये कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट, उसको इंपोर्ट करना है. तो हमारा सिंटैक्स है फ्रॉम दिस लाइब्रेरी import this class. Okay, now let us create a object of this. So let's say my classifier is denoted by CLF. CLF stands for classifier. Okay, and create an object of this class, but it has one parameter called criterion. Okay, we have to use a entropy criteria. Okay, delete this और यहाँ से entropy select करना है. Okay, so my classifier will be created. Then okay, classifier is created. Then I can give, I have to use fit function for fitting that classifier for my data. Okay, and my data is present in x and y. यहाँ पे क्या है, इनपुट एट्रीब्यूट्स और आउटपुट एट्रीब्यूट्स देने पड़ते हैं, राइट? ओके, सो आई कैन कॉल अ फिट फंक्शन for fitting my data in this classifier. Okay, so this classifier will be trained on my data. Okay, so let us run that. Yes, our classifier is ready. Okay, and if I call clf dot score, ये score function मुझे देगा accuracy. Okay, and let us find out accuracy for that set itself. Okay, and the value is 1. Okay, that means all the training data are correctly fitted in that decision tree. Okay, got the concept? Okay, but in the yesterday's class we have seen that we should test our model on a separate independent set, right? Remember? Okay, so we have to use out of this 150 some for training and some which are independent for the testing. So let us split this data set into 80 and 20%. Okay, 80% we will be using for the training and 20 for testing. Okay, so 150 का 80% यानी कि कितना होता है? 20% 30 हो जाएगा. Okay, 120. ओके, 120 सैंपल जाएंगे ट्रेनिंग के लिए और 30 जाएंगे
टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास लाइब्रेरी है, ओके। हमें क्या पता होना चाहिए, क्या यूज करना है, राइट। बाकी सिंटैक्स याद रखने की जरूरत नहीं है, ओके। यू सर्च फॉर दैट लाइब्रेरी एंड यू विल गेट अ सिंटैक्स फ्रॉम देयर. So I know that in order to split our data set into training and testing, this is the library I had to use. Model selection, train, test, split. Open that. Okay, and copy this. So are you getting how I am building my solution? ओके अगर आपका एम क्लियर है, हमें क्या करना है और हमें क्या क्या यूज करना है, अगर आपको ये पता होगा, देन नो नीड टू मग अप द कमांड्स, ठीक है। हर एक कमांड के लिए आप सर्च कर सकते हो, ओके। मुझे भी नहीं, सब कुछ मुझे भी नहीं पता, बट व्हाट आई हैव टू यूज दैट आई नो. सो व्हाट आई डू, ओके, आई सर्च फॉर दैट and I take the code from there. Okay, see how to use train test split. If I don't know, then I will see its example. It will be there. See, train test split. It gives four thing, that is x train, x test, y train, y test. Okay, I will take this as it is and I will modify according to my need. Okay, I wanted 20% in test, so I will erase this and make it 0.2. और मेरा डेटा x और y में ही है, ओके। सो आई कैन रन दिस मच कोड एंड इफ आई show you the shape of my x train, it is 120 by 4. shape is the attribute on data frame, okay. so देखो 150 में से 120 आ गए ट्रेनिंग में। वैसे ही मैं अगर y ट्रेन दिखाता हूँ आपको, तो उसका शेप मुझे बताइए कितना रहेगा, y ट्रेन का शेप क्या रहेगा? ट्रेन है, ट्रेन, ट्रेनिंग सेम में सेम सेम 120 कॉमा 1 1 रहेगा क्योंकि y इज द आउटपुट कॉलम, सिंगल रहेगा, राइट। हाँ 1 नहीं आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ, सॉरी x टेस्ट करता हूँ, देखो ये 120 बाय 1 क्यों नहीं है, क्योंकि इट इज अ रो वेक्टर। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये रो वेक्टर है, ये कॉलम वेक्टर नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई 1 नहीं है, ठीक है। सो यहाँ तक अपना क्लियर है, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्प्लिटिंग अवर डेटा, ओके, इनटू 8:2 रेशो। Done. Now, instead of fitting on entire x, we will be fitting on x train. ओके तो ये सेल मैं नीचे ले लेता हूँ, ये बटन से वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, और मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, और फिट करूंगा मैं ट्रेन के लिए, ओके, ट्रेनिंग पार्ट के लिए, ठीक है। और मैं स्कोर चेक करूंगा टेस्टिंग पार्ट के लिए। हाँ यस, ओके चलो, ओके। इंडिपेंडेंट सेट भी जब है तो भी मेरा क्लासिफायर एक्यूरेसी 1 ही आ रहा है, okay. That means, okay, actually the data samples are very less, okay, and they are the actual readings of a flower. So and उनकी जो डिसीजन बाउंड्री है ना, वो वेल डिफाइंड है, ओके। एक क्लास उसके बिलो ये कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 100% एक्यूरेसी। बट इफ यू हैव अ नॉइजी डेटा, ओके, या फिर बहुत ज़्यादा सैंपल्स रहेंगे, तो यू विल गेट एक्यूरेसी वैरिंग बिटवीन 0.7 टू 1.0, ठीक है। सो ये बहुत ही आइडियल डेटा सेट है, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 1.0 accuracy score. And if I want to show you the decision tree which is created, so for that I will use sklearn. sklearn से एक ट्री क्लास जो हमने यहाँ पे भी यूज किया है, ओके। और ट्री में प्लॉट ट्री नाम का फंक्शन है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको शो करने का ट्राई किया था बट हुआ नहीं था। और ये मेरा क्लासिफायर, हाँ
हाँ, इसके लिए मुझे मैटप्लॉटलिब भी लगेगा। सो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब pyplot as plt डॉट शो। तो ये ट्री है अपनी। आ, बहुत ब्लर है। ओपन इमेज इन न्यू टैब। ओके, दिस इज द ट्री दैट वी हैव गॉट। तो यहाँ पे देख सकते हो सी x2। ओके, दिस इज अवर x2। x2 इज अवर थर्ड कॉलम। ओके, और 4.75 is that threshold value. Okay, next thing I can show you is uh, so we have created our matrix, right? ये मैट्रिक्स मैं आपको शो कर सकता हूँ व्हाट इज द प्रिसीजन रिकॉल स्कोर फॉर माय क्लासिफायर। ओके, तो जब भी आपका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम रहेगा यू कैन यूज दिस मैट्रिक्स। ओके, सो यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा और मेरे लेबल्स यहाँ पे 012 है, राइट? हमने y ट्रांसफॉर्म देखा था, 012 लेबल है। ओके, और ये मेरा y ट्रू और y प्रिडिक्टेड है। ओके, यहाँ पे थोड़ा आपको आंसर देना पड़ेगा। See, I have trained my model using a training set. Okay, x train y train यूज करके मैंने ट्रेनिंग किया। और हाँ, एक मिनट, मुझे प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। तो आई हैव टू यूज प्रेडिक्ट फंक्शन clf डॉट predict the values for my x test। देखो, x टेस्ट में क्या है, अपने टेस्टिंग का डेटा सेट है, यहाँ पे 30 कॉलम्स है। ठीक है, इसके लिए मैं प्रिडिक्शन लूंगा जो कि y प्रिडिक्ट में रहेगा। ठीक है, अब मुझे बताइए मेरा y ट्रू क्या रहेगा और y प्रिडिक्ट क्या रहेगा। ट्रू लेबल्स क्या है और प्रेडिक्टेड लेबल्स क्या है, ये मुझे बताइए। एनीवन? One minute. This was my data set. Okay, my entire data set. Then I have splitted that in x and y. Okay, y is my output, that is class, यहाँ पे class था। okay, और x में 4 columns थे। ठीक है, ये हो गया x और y का स्प्लिट। ठीक है, और इसमें भी मैंने क्या किया, ये हो गया मेरा ट्रेनिंग के लिए, और ये हो गया टेस्टिंग के लिए। ओके, तो ये ट्रेनिंग का यूज करते हुए मैंने मॉडल बनाया। ठीक है, फिर आई एम यूजिंग दिस मच पार्ट। देखो, यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट बोल रहा हूँ, एक्स टेस्ट, ये जो पार्ट है जो मैंने सर्कल किया है, दिस इज माय एक्स टेस्ट। ओके, इसके लिए मेरे मॉडल ने प्रिडिक्शन दिया, दैट इज वाई प्रिडिक्ट। ओके, इसके लिए आउटपुट आया वाई प्रिडिक्टेड, बट एक्चुअल क्या है, ये है, राइट? ये मेरे ट्रू लेबल्स है जो डेटा सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो दिस इज माई वाई ट्रू। ओके, ये वाई ट्रू है, बट इसका नाम क्या है, वाई टेस्ट। देखो, यहाँ पे मैंने स्प्लिट करने के बाद उसको वाई टेस्ट बोला है। ओके, वाई टेस्ट आर द ट्रू लेबल्स एंड वाई अंडरस्कोर प्रिडिक्टेड आर द प्रिडिक्टेड लेबल्स। तो वाई ट्रू के जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एनीवन नाउ? टेस्ट लिखना पड़ेगा, राइट? बिकॉज वाई टेस्ट में हमारे ट्रू लेबल्स है जो डेटा सेट में ऑलरेडी है, राइट? ओके, और ये मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेबल से 012। ओके, ये मेरे ट्रू लेबल से जो डेटा सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है,
और ये प्रिडिक्टेड, ये क्लासिफायर ने प्रिडिक्ट किए हैं। अगर उसमें डिफरेंस होगा दैट इज ट्रीटेड एज अ एरर। ओके, और अब देखते हैं वाई टेस्ट हो गया, चलो इसको रन करते हैं एंड आई एम गेटिंग सम एरर, वाई प्रिडिक्टेड इज नॉट डिफाइंड। ओके, ये मैंने रन नहीं किया था, ये रन करते हैं। ओके, प्रिडिक्शन आ गए हैं। ओके, अगर प्रिडिक्शन देखना है सो यू प्रिंट दैट, ये प्रिडिक्टेड है, ये 30 सैंपल्स है टोटल। ओके, क्योंकि अपने टेस्ट में 30 है राइट, आउट ऑफ 150। इसको रन करते हैं और आई एम गेटिंग सम एरर, टारगेट इज मल्टी क्लास बट एवरेज इज बाइनरी। यस, देखो अपना जो पहला प्रैक्टिकल था यहाँ पे बाइनरी ये था। ओके, बाइनरी क्लासिफिकेशन था। नाउ इट इज अ क्लास, अपना जो प्रॉब्लम है यहाँ पे तीन क्लासेस है, तीन क्लासेस है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग एरर। प्रिसीजन स्कोर, इसको अगर हम सर्च करते हैं, यहाँ पे एवरेज मिलेगा मैक्रो। ओके, तो जब बाइनरी क्लासिफिकेशन रहता है देन वी हैव टू सेट बाइनरी, कहाँ गया एवरेज, एवरेज में will be ignored when y true is binary। ओके, बट बाइनरी नहीं है तो हमें वहाँ पे ये ऑप्शंस है, माइक्रो, सैंपल्स, वेटेड, मैक्रो, मैक्रो। ओके, सो उसका मीनिंग उतना डेप्थ में नहीं जाना है, वहाँ पे हमें सेट करना है यहाँ पे एवरेज इक्वल्स टू, लेट्स यूज माइक्रो। ओके, इफ एक्यूरेसी comes less than 1 we'll change it to some other option। okay, तो हमें एवरेज इक्वल्स टू माइक्रो सेट करना है, कॉपी, for this three function we need that parameter and run that। okay, so see, you are getting accuracy as 1, precision score as 1, recall score as 1, f1 score as 1, means it is 100% accurate। और confusion matrix में भी देखिए, along the principal diagonal you have the entries। okay, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है 0, दैट मीन्स नॉन डायगोनल इंडिकेट्स एरर राइट, देर इज नो फॉल्स पॉजिटिव, नो फॉल्स नेगेटिव। ओके, so this is how you have to perform the practical for decision tree। any doubt? So you will be doing for one unknown data set। okay, so you follow the steps that I have followed now। okay, first you try to understand the data set, what information it is storing। okay, then you start reading the data। okay, if something is required, if some change is required, you do that। for example, there was no header in my data set। okay, so I have to do this change first। okay, header equals to none, then I decided to insert that attribute row। so for that I have searched and I have found out that I have to set this columns parameter। okay, I have given the names, then I have observed that y is containing string values। okay, so make it number। so for that we know that we have to do label encoding, so you should remember this class name। then we learned that we should evaluate our model on a independent set। okay, which we call as testing set। so we have done this train test split। okay, 20% we kept for testing। okay, then we have created the object of our classifier, we are using entropy as the criteria। then we have plotted the tree। okay, we should see the tree how it is looking, which attribute is set at the root level। okay, so we have plotted our tree। then for the evaluation we have used our classifier for predicting the values for our testing part। okay, so this is the predicted values, actual values are stored in y test। okay, ये actual labels है, उसका comparison कीजिए and we have this module ready with us। okay, just I have pasted it here and I have evaluated। okay, so
Any doubt? So you'll be performing on one unknown data set. So follow the same step and uh, you will not have any problem. Okay. So any doubt? Okay. Take a screenshots of a code. So you can start with this data set and then you move to next data set. And for all classifier, you can use the same data set. Okay, because you will be comfortable with that data set. Okay, then if you then you can use same classifier, same data set for base classifier SVM. Okay, okay. This is second thing, second screenshot, and the last one. Okay, so we'll stop here. If you have any doubt, you can ask now. So the submission date for this practical will be 29. Okay, so you have 1 week time and still you have not submitted the first practical. Okay, most of you have not submitted. And I will be evaluating 3 practicals. Okay, once we complete 3 practical, I will start evaluation. Okay, and you have to submit individually. Earlier I thought of getting the assignments through mail. Okay, that's why I said that you have to mail a single copy. Okay, but in classroom you have to submit individually. Okay, mention your team details in that PDF. Okay, but submit individually. If you are not getting the ML code, please ask. Okay, and this is how we learn coding. Okay, in the first year also you may struggle, you might have struggled at the earlier stage, right? Okay, but you have to keep writing the code, then you will get familiar with the syntaxes and the libraries.